Good evening, everyone. On behalf of Endocrine Society of India, I welcome you all to yet another enlightening public awareness session. Those who follow us regularly should be aware that this month we are discussing obesity. So today's session is on obesity, its causes and consequences. For discussion of today's session, we have four very eminent endocrinologists from our country. I would like to welcome Dr. K.M. Prasanna Kumar sir. Sir is a very senior endocrinologist based at Bengaluru. Good evening, sir. We welcome you. Uh, the second endocrinologist with us is Dr. Preeti Dabadgao ma'am. Ma'am is Professor of Endocrinology at SGPGIMS Lucknow. Good evening, ma'am. We welcome you. Hello. Third endocrinologist with us today is Dr. Swati Jadhav ma'am. Ma'am is consultant endocrinologist at Trustwell and HCG Hospital, Bengaluru again. Good evening, ma'am. We welcome you. Good evening, everyone. And the fourth endocrinologist with us today is Dr. Ashish Sehgal, sir. Sir is a consultant endocrinologist at Karnal. Good evening, sir. Most welcome. Good evening. Good evening, everyone. So without any delay, I would like to proceed with today's session. So to start with, I would like to ask Prasanna Kumar, sir. Sir, I want our patients to know that how is the body weight regulated? Why do we get fat at all? Good evening, everybody. Thank you, Dr. Nancy, for that. This is a question everybody asks. How do we become fat? How do we regulate our body weight? How do we maintain? Basically, you should start understanding what is energy balance. What do you mean by energy? Where does energy come? Every cell needs energy, whether it's in the form of glucose and others. The food that you take is the energy you take. Not only that you take energy food, which becomes energy, which may become glucose or protein or fat, there is also expenditure. It is just like your house or income and expenditure. Suppose your income is more, expenditure is less, you are rich or you are fat. Suppose your income is less, expenditure is more, you are thin or poor. This is exactly what happens. It is the energy balance between energy intake, that is calories consumed. This is a public awareness program. I'm talking in a layman's term. So the number of calories that you consume, number of calories you expenditure, that determines the energy stores. How is it that energy can be stored? Is it short term, long term, very long term? All of you know one of the ways that body can store energy, which you may need later on, is in the terms of fat. Source of fat has got maximum energy. What happens when 1 gram of carbohydrate is spent? What happens when you take 1 gram of protein or 1 gram of fat? The fat has got maximum calorie. So also, when you have excess of calorie, it is stored in the terms of fat. Why do we get fat? Simple reason is if energy intake is more, the expenditure is less, then you have extra calorie. Let us say you need 1,000 calorie per day and you take 2,000 calorie. That 1,000 calorie of extra, where will be absorbed and where it will be kept. And this extra 1,000 calorie will be stored in the form of fat. That is how we become fat. Imagine a child is born 3 kg. What do you see? Let the child eat, mother wants the child to be fat and all. The 3 kg child becomes 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Let us say after 18 years, the child cannot grow vertically. What happens to extra calorie? It has to grow horizontally. So remember, as long as you are eating, there is a calorie intake. And if there is extra intake, you put on fat. Let us say for a normal daily, you need 1,500 calorie. And if you take 2 slices of bread extra, you are taking 200 calorie per day. Then at the end of 1 year, you put on 3 kg of weight. This is how the body weight is regulated in a very simple term. This is not the end. All obesity is not just due to overeating, lack of exercise. There are many other things. Subsequent speakers are going to tell you that what are the other things which regulate the body fat. Is it hormones? Is it some other gland? Or is it metabolism? What is metabolism? How much of calorie we need metabolism? Over and above that, when you have extra calorie, how it is stored in fat. Let us take example when you are 15, 16, 18. You are eating so much, you are thin, 30, 40 kg. Same person, 13,
to 30 to 60 or 70 becomes fat. Why? As we grow, the body gets accustomed. The energy expenditure becomes less. From 3000 calorie, you take 1000 calorie, still body uses 500 calorie, you have extra 200 calorie. So in the same person, this energy balance alters between childhood, adolescent, middle age, and old age. Very old people, let them eat any amount at 85, 90, cannot put on weight because body cannot absorb at all. The energy intake and also utilization, absorption, ultimately how much of extra. If you spend more calories, probably the energy balance is negative, you will not put on weight. This is a very simple way to just summarize. Change in energy stored is equal to energy intake minus energy expenditure. Just the equal balance. Thank you. थैंक यू सो मच सर. अगर हम सिंपल शब्दों में कहना चाहें तो जितना हम खाते हैं और उसमें से हम जितना खर्च करते हैं इट डिटरमिन्स कि हमारे बॉडी का वेट क्या होगा. So we get fat simply because we eat more and we spend less. So moving on, I would like to put my next question to Preeti ma'am. Ma'am, what are the most common causes or factors behind obesity in our country, in our population? जैसे डॉक्टर प्रसन्न कुमार ने बोला कि बेसिकली जो कॉमनेस्ट या सबसे कॉमन कॉज है वजन बढ़ने का या मोटापे का, कि एनर्जी इंटेक ज्यादा है और खर्च कम है. तो इसे हम साइंटिफिक टर्म में एक्सोजिनस ओबेसिटी बोलते हैं. जैसे एक्सोजिनस मतलब हमारे बाहर से एनर्जी इतनी ज्यादा आती है शरीर में जो हम खर्चा नहीं कर पाते. और ये जो है ये फैमिली के रहन सहन या दिस वी कैन कॉल इट एज अ लाइफस्टाइल डिजीज बिकॉज our eating pattern, our activity, our exercise is determined by how your lifestyle is. हम बैठे रहने वाली प्रकृति के हैं या हम थोड़ी बहुत एक्टिव हैं या हम बहुत ज्यादा एक्टिविटी करते हैं, मतलब सिडेंट्री हैं या लाइट या मॉडरेट एक्सरसाइज करते हैं, या जो हमारा कार्य है वो इन्वॉल्व करता है. जैसे सपोज कोई स्कूल टीचर है, छोटे बच्चों की स्कूल टीचर है, तो उसको हम सिडेंट्री या मॉडरेट, सिडेंट्री तो बिल्कुल नहीं बोल पाएंगे, हम मॉडरेट बोलेंगे क्योंकि छोटे बच्चों के साथ टीचर को बहुत एक्टिव रहना पड़ता है. उसी के बनस्बत यदि हाई स्कूल टीचर है तो वो सॉर्ट ऑफ लाइट एक्सरसाइज हो जाएगी बिकॉज फॉर हाई स्कूल टीचर यू डोंट हैव टू रन अराउंड स्मॉल किड्स. तो इस तरह से दैट इज बिकम्स योर लाइफस्टाइल डिजीज. ये एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है जो ओबेसिटी या मोटापे का कारण है. पर और भी, जैसे डॉक्टर प्रसन्न कुमार ने बोला कि सिर्फ यही नहीं डिटरमाइन करता कि हमारी एनर्जी किस तरह से खर्चा होती है. बहुत सारे हार्मोनल कंडीशंस होती हैं जिसमें शरीर की स्थिति ऐसी हो जाती है कि हम जितना खाते हैं उतना खर्च नहीं कर सकते. एंड मे बी हार्मोनल कॉजेज आगे डॉक्टर आशीष उसके बारे में विस्तार में बात करेंगे. ही विल टॉक अबाउट दैट hypothyroid because that is the commonest condition with which people come to our clinic, that we have put on weight and I'm getting fat because I'm hypothyroid. But here I would like to say that hypothyroidism doesn't cause such excessive weight gain, maybe 5 to 10 kilos at the most. If you're grossly hypothyroid, मतलब बिल्कुल ही thyroid hormone level आपका zero है, तो you can say that 10 maybe kgs at the most. But जो 80, 90, 100 किलो के लोग होते हैं उनमें थायराइड एक कारण नहीं हो सकता. पर और भी हार्मोन्स हैं जैसे कुशिंग्स हैं जिसके बारे में आगे बात करेंगे. फिर कुछ सिंड्रोम्स होते हैं, जैसे लोगों ने सुना होगा कि सिंड्रोम का मतलब होता है कि कोई भी एक ऐसी कंडीशन जिसमें 3-4 चीजें सिस्टम मतलब अलग अलग, जैसे हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो, किडनी की कोई प्रॉब्लम हो, बोन्स की कोई प्रॉब्लम हो, वो एक समूह हो जाता है सारे प्रॉब्लम्स का, उसे सिंड्रोम कहते हैं. तो कुछ सिंड्रोम्स होते हैं जैसे कॉमन आपने सुना होगा प्राडा-विली है, या इस तरह के जो सिंड्रोम्स हैं जिसमें मोटापा एक खास क्लिनिकल फीचर होता है. उसके साथ कभी कभी मंद बुद्धि होती है या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है या बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं. तो कुछ सिंड्रोम्स होते हैं जिनकी वजह से मोटापा हो सकता है. फिर जैसे हमें पता है कि हर बीमारी के लिए कोई जेनेटिक कॉजेज भी हो सकते हैं. तो एनर्जी यूटिलाइजेशन में जो जो हार्मोन या फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं उनके जीन के डिफेक्ट्स हो तो उसकी वजह से भी मोटापा हो सकता है. और कभी कभी हाइपोथैलेमस जो हमारा ब्रेन का एक सेंटर होता है जो कंट्रोल करता है सारी बेसिक फिजियोलॉजी को, कि आपका बॉडी टेम्परेचर क्या है, आपका ब्लड प्रेशर क्या है, आपका हार्ट रेट क्या है, आपको भूख लगती है कि नहीं, नींद आती है कि नहीं,
उस ब्रेन के लेवल पे यदि कोई खराबी आ जाए, यहाँ वहाँ ट्यूमर हो या वहाँ कोई चोट पहुंचने से कोई उसको नुकसान पहुंचे, तो उस कंडीशन में आप खाते ज्यादा है, सोते ज्यादा है, तो फिर वही हो जाता है कि आपका इंटेक ज्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है. तो ये 4-5 मेजर ग्रुप्स हैं फॉर कॉजेज ऑफ ओबेसिटी. Thank you so much, ma'am. So I would just like to summarize कि अगर if you are obese and you think it is not because कि आप ज़्यादा खाना खाते हैं या कम एक्सरसाइज करते हैं and still you are obese and not able to lose your weight, then it is not a bad idea to consult your endocrinologist or physician, ताकि ऐसा कोई सेकेंडरी कॉज तो नहीं है जिसका इलाज हो सकता हो और आप ओबेसिटी से मुक्त हो सकते हो. So to move on, Swati ma'am, we see so many families in which all the members are suffering for obesity. So जैसा कि प्रीति मैम ने कहा, is it a hereditary condition और ये परिवार के खाने का पैटर्न गलत है that everybody gets obese? So what do So you? Nancy, it's very true. All of us, if they think about, they would immediately a family whose all the members are obese will come to each of our minds. So it is a very common thing, and I think it is both. It's both hereditary as well as environmental. It's like the seed and soil. For a plant to grow, we need a good fertile soil, and also we need a good seed. पौधा बढ़ने के लिए हमें अच्छी सॉइल चाहिए, अच्छी जमीन चाहिए, उपजाऊ जमीन चाहिए, और साथ में सीड भी अच्छा चाहिए, बीज भी अच्छा होना चाहिए. उपजाऊ जमीन मतलब क्या? सेडेंटरी लाइफस्टाइल, रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स, ये सारा एनवायरमेंटल फैक्टर्स बिकम्स अ गुड फर्टाइल सॉइल. So definitely common, all the members in the family are going to eat from the same kitchen. So the cooking habits, the amount of oil consumed, and even the factors like the portion sizes consumed by all members of a family, number of idlis the male members eat in a family are roughly proportionately the same, and they may differ from family to family. So definitely these environmental factors contribute to obesity in all the members of the family. ये तो है, लेकिन all the seeds are not the same. The soil might be the same, but the seeds are all not the same, because we often see, कई बार ओबेसिटी के लिए कंसल्ट करने वाले पेशेंट्स बताते हैं कि मेरा ये फ्रेंड है, वो तो मुझसे डबल खाता है, लेकिन फिर भी वो बहुत दुबला है और मुझे ऐसा क्यों हो रहा है. एंड इवन विद इन द सेम फैमिली, अगर एक घर में 4 सिबलिंग्स होंगे तो हम ये देखेंगे कि 2 या 3 ओबीज है लेकिन एक somehow नहीं है. He eats from the same kitchen. So that what I mean to say is हर बीज का potential is different, and that is what genetics is. That is what nature has decided for us. All of our body's capacity to handle food, capacity to utilize food, in our language we call it metabolism. So everybody's metabolism is genetically determined and it's different. So it's both the factors. Obesity runs in families of the environment factors, also the kind of cooking and eating habits, and it is also their own genetics. So I think it's both. Thank you so much, ma'am. So since we have now well discussed that lifestyle and genetics are two factors that definitely lead to obesity. So Ashish sir, I would want you to know, to tell us that apart from genetic and lifestyle causes, are there any secondary hormonal disorders that predispose a patient to become obese or fat? Yes, very right. As has been discussed, that most commonly it is actually exogenous obesity, poor lifestyle that leads to it. But sometimes we encounter individuals who have a secondary cause. By secondary cause, we mean there is some other disease and that is leading on to increased body weight. Now, endocrine causes, and by the term endocrine we mean hormone-related causes. There are few of which can predispose to further weight gain. The common one, जो सबसे common है जो हम लोग देखते हैं, that is hypothyroidism. Thyroid is a gland. That is the most common misconception that all of us have. Thyroid किसी बीमारी का नाम नहीं है. Thyroid एक gland का नाम है जो हम सब में होता है. That functions to produce two very important hormones, T3 and T4. इसमें जो T3 होता है, वो active form of hormone है. इसका काम है हमारे basal metabolic rate, हमारे resting energy expenditure को maintain करना, उसको regulate करना. तो जब हाइपोथायराइडिज्म होती है, इसकी डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से टीएसएच बढ़ जाता है. तो T3 कम है तो रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर कम है. ऑब्वियसली जैसे हमने पहले बात किया, प्रसन्न कुमार सर ने बात किया कि
ये बैलेंस है इनटेक और एक्सपेंडिचर में। तो एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली वो बैलेंस ज्यादा वेट की तरफ जाएगा, पहला। दूसरा, जब हाइपोथायराइडिज्म में टीएसएच बढ़ता है, दैट टीएसएच एक्चुअली प्रिडिस्पोजेस टू मोर एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर इन ग्लाइकोसिनोग्लाइकेंस इन अस। क्लिनिकली हम ये कैसे बताते हैं, एक जनरलाइज्ड ओबेसिटी का पैटर्न होता है, फेस पे पफिनेस रहता है, and there is a edema, I mean a swelling of arms and legs, and which does not dimple when we put pressure on it. It is medically called non-pitting edema. ये कुछ फीचर्स हैं, साथ में देयर इज अ पैल्पेबल गॉइटर, थोड़ा सा थायराइड का एनलार्जमेंट हो जाए। So these are the indications that lead us to think that the individual who is obese actually has a hypothyroidism as one of the causes that is leading on to increase in weight. So this is one important cause, hypothyroidism. Much less common than that is something called Cushing's syndrome. Cushing syndrome एक हार्मोन के एक्सेस से होता है। ज्यादा कॉमन इसमें एक्सोजीनियस कुशिंग्स है। वंस अगेन, बाहर से किसी को किसी वजह से इंडिकेटेड या अनइंडिकेटेड तरीके से स्टेरॉइड दिया जा रहा है। द कॉमन मिसयूज्ड वंस आर प्रेडनिसोलोन, वाइसोलोन के नाम से आता है। आई एम नॉट सपोज टू टेक ब्रांड नेम्स हियर। सो द कॉमन वंस आर, आई मीन जो हमें बाहर से दिए जाते हैं जो स्टेरॉइड्स होते हैं, दे कैन बी गिवन इन डिजीज लाइक अस्थमा और सम फॉर्म्स ऑफ आर्थराइटिस। बट बहुत टाइम पर इसका मिसयूज भी कॉमनली किया जाता है, उसकी वजह से जो वेट बढ़ता है। ये जो स्टेरॉइड्स हैं या तो बाहर से ज्यादा दिए जाएं, और दे कैन बी प्रोड्यूस्ड इन अ इरेटिक वे फ्रॉम द एंडोजीनस एड्रिनल ग्लैंड्स वेयर इट इज प्रोड्यूस्ड इन द फॉर्म ऑफ कॉर्टिसोल। सो व्हेन दीज स्टेरॉइड्स either from the external side or internally from the adrenals, when they are produced in excess amounts, they lead to increase in body weight. And this body habitus, जो distribution of fat होता है इस केस में, that is very peculiar. It's described in our medical textbooks as lemon on stick. The arms and legs, because of muscular wasting, are very thin there, and it's actually the abdominal fat which increases. पेट का गर्थ, abdominal गर्थ बहुत बढ़ जाता है। बहुत टिपिकल इसमें एब्डोमिनल स्ट्राई होते हैं, चौड़े चौड़े रेड कलर के मार्क्स होते हैं पेट के ऊपर। बीपी बढ़ता है, और लेडीज में मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स होती हैं, और आई मीन फेस पे हेयर ग्रोथ हो सकता है। ये सारी चीजें खास तौर पे अगर आर्म्स और लेग्स पतले हैं और पेट ज्यादा बढ़ रहा है, और ये वाले जो स्ट्राई वाले फीचर्स हैं अगर ये हैं, देन योर एंडोक्रिनोलॉजिस्ट और जो फिजिशियन कैन subject you to a screening for this disease. So ये second important cause है Cushing's syndrome जिसको हम बोलते हैं। Apart from that, less common is growth hormone deficiency. Now it's a misconception कि growth hormone सिर्फ बच्चों में चाहिए होता है, बड़ों में नहीं चाहिए होता। In fact, there is a typical syndrome, a disease, adult growth hormone deficiency as well. So बच्चों में भी बड़ों में भी growth hormone की deficiency से भी fat body का बढ़ता है। And if this is more often, I mean most often got in children, बड़ों में इतना स्क्रीन इसके लिए नहीं किया जाता है। Nevertheless, adult growth hormone deficiency is known to cause increase in body weight as well. Then hypogonadism, फीमेल्स में ईस्ट्रोजन की कमी, मेल्स में टेस्टोस्टेरोन की कमी, इससे बॉडी हैबिटस चेंज होता है, और इसकी वजह से भी ओबेसिटी, बॉडी वेट बढ़ने का चांस रहता है। सो ये हमने लेस डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कॉमननेस में डिस्कस किया है। इवन फर्दर लेस कॉमन, देयर इज समथिंग कॉल्ड सूडो हाइपोपैराथायराइडिज्म, जिसमें एक टर्म होती है एल्ब्राइट हेरिडिटरी ऑस्टियो डिस्ट्रोफी, जिसमें कई सारी चेंजेस आते हैं बॉडी में, हाइट कम रहता है और बॉडी वेट बढ़ता है। सो these are the examples of endocrine causes, hormone related secondary causes of obesity. And whenever you think that you have some other problem, you're not feeling good, you have some symptom that was not previously there, it's always a good idea, as Dr. Nancy pointed out, to visit your endocrinologist, or depending on the clinical features, जो आप में symptoms और signs हैं, उसके basis पे your endocrinologist will screen you for these diseases, और इसका treatment possible है, और treatment से I think you can easily shed your excess body weight, और जो दिक्कतें हैं उनको भी we can take care about them. थैंक यू सर। सर, क्योंकि हमने हाइपोथायराइडिज्म के बारे में बात किया, आई जस्ट वांट टू आस्क हियर इटसेल्फ कि अगर कोई हाइपोथायराइड है और मेडिकेशंस पे कंट्रोल्ड है, तो क्या वो फिर भी सोच सकता है कि उसका वेट थायराइड की वजह से बढ़ रहा है? नहीं, then we have to think of something else. Most like etiology there is actually a poor lifestyle. Once you control your TSH, then it is not thyroid that is the culprit behind your body weight. Right, because it is a very common misconception, those who are hypothyroids कि हमारे को thyroid हो गया है, that is why they are obese, even if they are controlled on medication. So definitely this is a myth. This does not happen. If you're controlled on your thyroid medication, then definitely that is not the reason for your weight gain.
Right, thank you, sir. Prasanna, sir, moving on to children. Children these days are frequently seen obese only, and most of the parents are like, "Hamara bacha to healthy hai." So, can we actually call that as healthy? Yes, as you said, that most of the parents, when the child is born, first question they ask, is it boy or girl? After that, they ask, what is the weight of the child? If they say 3 kg, 4 kg, very good, that's good. And every time when they see, they want their children to be chubby, chubby. So every mother wants their child to be fat. If the child is thin, they say, what is wrong? Why this child is thin? क्या उनको बीमारी है क्या? So this is how it is a cultural change we see. Again, from poverty to plenty. If we see, the GDP has increased 10 times in the last 50 years. When we were 5 or 6 children, most of the children had less food. There was no chocolate, no ice cream. It is all luxury like that. Today, in 50 years, from poverty to plenty, from 6 children to 2 children. Parents also have that attitude. बेटा मेरे जमाने में चॉकलेट नहीं था, आइसक्रीम नहीं था, अब मेरे पास पैसे हैं, तुम खाओ. What I did not enjoy, my child should enjoy. We did not have TV, now you see TV. See, this is how the childhood obesity is increasing. Previously, we thought, no, no, only American, European children are fat genetically. Now, what you see, the obesity in children is increasing not only in developed countries, developing countries like China, India, Asia, everywhere you see. Children are fat. And in most of the cases, our children are fatter than us. And this is because of psychological, social, cultural, economic, so many other reasons. Everybody thinks till the age of 6, 7, 8, 9, it's the child is chubby, is healthy. Same child becomes 60, 70, 80, 90 kg at 18 years. Then you see us scared. Look at children when we were in middle school, high school, we were all so thin. Now you see 20-30% of children in the high school are already obese. Again, childhood obesity also depends upon stages before puberty, during puberty, post puberty, and all these things. The fat content also changes. Ultimately, obesity बीमारी नहीं है, लेकिन obesity सारा बीमारी का माँ बाप है. Though children obese, they become obese adolescent. Obese adolescent becomes obese adults. If you look at obese adults, 30% of these adults were obese in childhood also. Some people say, sir, I was never thin at all. I was a fat child, fat adolescent, now fat middle age. That is why that obesity is not healthy whether children or adults. Because obesity in children can lead to social, psychological, academic, emotional problem. If the child is very fat, what happens? Everybody will tease, oh mote, oh mote. Then the child comes coming. See, everybody is telling mote, mummy, I will not go to school. Because everybody is telling that child you are fat and all. We know even when we were children that some children was fat, that people did not, it's not good, and they were probably making fun of that child. That it's no fault of that child many times. As doctor said, it may be disease also, hereditary also, genetic also. So obesity, one, it can cause emotional problem, psychological problem also. Lot of obese people, obese children have inferiority complex. Again, if you see academic performance, obese children perform poor compared to normal weight or thin. There are many medical problems, will come to that, whether it is hypertension, diabetes, cholesterol, arthritis, asthma, everything can happen. So that is why obesity, though not a disease, is probably the mother and father of many diseases. That's why you should see a height and for weight chart, right? So your pediatrician or pediatric endocrinologist will give a chart. Right from birth, they say this should be the weight of the child at birth. Now it is more. What should be the height, weight at 1 year, 2 years, 3 years, 5 years? And all the schools are supposed to maintain school health records, whether government or private. People say, what is the weight? Nobody bothers about height. Both are important. And also, for that height, your child underweight, normal weight, overweight. Underweight is also not good. Overweight is also not good. That is called as malnutrition. Malnutrition involves both, whether it is overweight or even underweight also. Please check your child's weight from birth till they are in the school also every year, height and weight.
Show it to your pediatrician. Is my child weight correct for his age? Is my child's height correct for his age? Is he obese, underweight? Is he short or tall? By maintaining that, your doctor can advise, no, this child is overweight, you should make the child, you cannot make the child eat less because child has to grow. And when we were children, there was PT class 1 hour, 2 hours, 4 o'clock to 6 o'clock we are waiting. Today nobody plays at this one. They don't want children to play in the school. There are no playgrounds also. Look at the economic status improving. Look at the hotels that are increasing. There was probably one McDonald 1968. Today there are 368 in the country. 50 years. Every road there is Darshini. And it was a green revolution, white revolution, IT revolution. Now it is eating revolution. So these are all the causes: social, cultural, economic, and even religious. When all of us get together, what does it say? You prepare good food, mummy, all of us eat. We don't say we go cycle and all. So whether it is Eid, festival, or any festival, eating is the only activity it is done. Nobody says we should exercise. And we are very secular in following every religion, every feast. There is no fasting. Fasting is minimal, feasting is there. So, like parents, children also become obese, and definitely obesity is not good because of psychological, academic, social, and all retardation, social retardation, academic retardation, physical diseases, psychological, emotional problem. All these will come in a child. Definitely is not healthy for a child to be obese. Definitely. Thank you so much, sir. Very well said and very well elaborated. So हर चबी दिखने वाला बच्चा आपका healthy नहीं होता. So you should better consult your pediatrician or endocrinologist to know where on the growth chart your child's height and weight falls. And if the child is overweight, you should try and control it at the appropriate age and not wait for the child to grow and then control his weight. Okay, so moving on, Preeti ma'am, you told us very well about the causes of obesity in the adults. So, since you're talking about children, are there any specific or different causes in children that we are supposed to look into that cause obesity in children? Especially the syndromic and the genetic causes of obesity, जैसे बोला ना, तो early on, मतलब less than 1 year या early 2 years के अंदर जो obesity आएगी, उसमें mostly causes होंगे genetic and syndromic will present by then. Or if they have any typical features, then syndromic causes are picked up in children. So they form a good proportion of causes for obesity. एक्सोजेनस ओबेसिटी जैसे एडल्ट्स में है वैसे बच्चों में भी रहता है और उसके काफी कॉजेज हो जाते हैं चाइल्डहुड ओबेसिटी बिकॉज ऑफ एक्सोजेनस और लाइफस्टाइल फैक्टर्स एज ऑल द पैनलिस्ट सेड सभी ने बोला कि हमारा लाइफस्टाइल इज डिफेक्टिव है तो जैसे डॉक्टर प्रसन्न कुमार ने बोला कि जंक फूड आई थिंक चिल्ड्रन जस्ट लव एंड पेरेंट्स गिव इन फॉर द जंक फूड ऑल काइंड्स मतलब आई थिंक आर ईटिंग पैटर्न जो हमारा खाने का स्टाइल था कि रोटी सब्जी दाल चावल जो था वो इवन रूरल एरियाज में बदल गया है दे टेक प्राइड इन ईटिंग पास्ता चाउमीन ऑल दैट इज इजीली अवेलेबल अब गांव गांव में आपको मैगी और चाउमीन और बर्गर वाले खोमचे दिखेंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा तो मतलब सिर्फ शहरों में ही नहीं गांवों में भी हमारी खाने का जो खाना है वो पूरी तरह से बदल चुका है और दूसरा कारण है कि बच्चे जब हॉस्टल वगैरह में रहते हैं जितने लोग विदेश भी गए होंगे या एक्सपीरियंस होगा वहां खुद बना के खाने का बच्चों में अभी भी है अपने कॉलेज और हॉस्टल्स इस तरह के नहीं है कि अपने बच्चे चाहे भी तो बना के नहीं खा सकते हैं हमने पहली बार ट्रेन नहीं किया है अपने बच्चों को और जो कुछ थोड़े बहुत बच्चे ट्रेंड होंगे कि वो खुद बना के खा सकते हैं ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं होती अपने स्कूल और कॉलेजेस में कि हॉस्टल में कोई इस तरह की हो कि वो हेल्दी फूड ऑप्शंस हो अब तो धीरे धीरे स्कूल के कैंटीन्स बदल गए कि ना अब जनरली जो बाहर कचौड़ी समोसे वाले खोमचे ठेले थे वो बंद हो गए हैं स्कूल कैंटीन्स हैव टू हैव अ हेल्दी ऑप्शन जो बहुत अच्छी चीज है कि आप कोल्ड ड्रिंक्स फ्रूट जूसेस ये सारी चीजें नहीं रख सकते अपनी आदत छूट गई है कि अपन गन्ने का रस पिए या फ्रेश फ्रूट जूस पिए हमें वो कैंड शुगरी ड्रिंक्स की आदत हो गई है मतलब एवरीथिंग sort of our lifestyle has changed and we have become more westernized and urbanized. We shouldn't even call it westernized. We should just call it as urbanized and something which we have totally lost connection with our own traditions. Shortcuts, easily available things.
जो इजीली अवेलेबल है, एब्सोल्युटली। दूसरा है टीवी। आई थिंक द स्क्रीन टाइम एंड दिस कोविड हैज बीन अ बिग menace in increasing the screen time because of online classes, work from home for students and children, everything. Now we have sort of become gadget robots, we have become gadget oriented. और अब आप प्लेग्राउंड में भी देखेंगे तो बच्चे आपको वीडियो गेम खेलते हुए दिखेंगे rather than running around on the playground. एंड थर्ड इज आई थिंक द स्लीप टाइमिंग्स। जो पहले होता था ना, दिया बत्ती हो गया, आप खाना खाइए, रेस्ट करिए और सो जाइए और सुबह उठिए। आई थिंक चिल्ड्रन, I don't know how many children would be getting up at 6 o'clock with the first crack of dawn. I don't think children even know what is that crack of dawn. So, and we know कि sleep cycle और कम सोने से किस तरह से metabolic problems होती हैं. So all these factors are equally relevant in children. And our curriculum, I think we really need to do something about this cutthroat competition and the academic curriculum of children at school. All children have lost their childhood. बचपना ना 5वीं 6ठी के बाद खो गया है बच्चों का, क्योंकि उन्हें अब ये जब 7वीं 8वीं में, तब से आईआईटी की तैयारी शुरू हो जाती है माँ बाप की और बच्चे की, और जब 9वीं 10वीं में पहुंचते तब तो मुझे लगता है वो भूल ही चुके हैं कि कोई खेल भी एक उनके जीवन का हिस्सा है. तो कहीं ना कहीं हमें ये सारी चीजों में एक सामंजस्य और तालमेल बैठाना बहुत जरूरी है, वरना अभी हम 20% है, कल को हम 50 और 60% होने में हमें देरी नहीं लगेगी. और ये सारे कॉजेज बच्चों में बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड वन, एज अ पीडियाट्रिक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट और पीडियाट्रिशियन, आई वुड से, एज डॉक्टर प्रसन्न कुमार ने बोला, कि बच्चे जब मोटे ना हो तो माँ बाप, वो माँ के ऊपर रिफ्लेक्ट करता है सबसे ज्यादा. माँ को एक हीन भावना दी जाती है. तो ये हमारा जो सोशल लेवल है ना, कि बच्चा यदि दुबला है तो माँ की कोई कमी है, तो माँ उसे पूरा करने के लिए बच्चे को इतना खिला पिला देती है. आई थिंक दैट टैबू हैज टू बी ब्रोकन. एंड वी स्टिल हैव स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज बेबीज. सो एज पीडियाट्रिशियंस हमें वो न्यूट्रिशनल काउंसलिंग स्मॉल फॉर जेस्टेशनल एज, मतलब जो बच्चे पैदा होते हैं उनका वजन 2.5 किलो से कम है, वो लो बर्थ वेट है, या बच्चा 34 हफ्ते में पैदा हुआ या 25 हफ्ते में पैदा हुआ, उसका वजन जितना होना चाहिए यदि उससे कम है, तो उन बच्चों को एक ग्रेडेड वजन बढ़ाने की जरूरत है. उनको तेजी से 6 महीने के अंदर नॉर्मल वेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वही बच्चे आगे चल के मोटे होते हैं और सारी बीमारियों का घर हो जाता है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल. तो एज अ पीडियाट्रिशियन एंड अ प्रैक्टिसिंग पीडियाट्रिक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हमें जरूरत है लोगों को सिखाने की कि बच्चे जो कम वजन के पैदा हुए हैं उन्हें अगले 2 से 3 साल में अपनी नॉर्मल ग्रोथ पोटेंशियल पे आना है, ना कि 6 महीने में. We will actually cut down a lot of problems later on in adult life if we just follow this much and educate people. Thank you so much, ma'am. Very well said, ma'am. So to moving on, Swati ma'am, we are like talking so much about being fat, gaining weight, being obese. So what are the ill effects of being obese on our body? Why is it bad to be fat? Yeah. So Nancy, had obesity just been a cosmetic concern, we all would not have been here today on this Right. forum discussing about obesity exclusively. It's not just a cosmetic concern for most patients. Obesity, that means increased fat, definitely has ill effects on our body. काफी ओबेसिटी से, फैट से काफी हमारे बॉडी पे असर होता है. मेन कैटेगरी मेटाबॉलिक इफेक्ट, मतलब कि ज्यादा फैट होने से कुछ चीजें होती है जो हमें फैट की वजह से होती है. पहली चीज तो ये होती है कि फैट ज्यादा होने से हमें डायबिटीज होने का चांस, शुगर बढ़ने का चांस ज्यादा रहता है, और कम उम्र में शुगर आने का चांस ज्यादा रहता है. दूसरा, हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स जो है फैट की वजह से ऊपर नीचे हो सकते हैं. तीसरा, जो 20 लोग हैं उनमें बीपी, ब्लड प्रेशर बढ़ने का चांसेस ज्यादा है. और ये सारी फैक्टर्स की वजह से जो हम कार्डियोवास्कुलर इवेंट बोलते हैं, हार्ट अटैक आना, ब्लॉकेजेस होना, स्ट्रोक आना, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ब्लड क्लॉट होने का प्रॉब्लम होना, ये सारी चीजों की भी रिस्क बढ़ जाती है. इसके अलावा ओबेसिटी का एक स्पेशल एडवर्स इफेक्ट हमारे लिवर पे भी होता है.
कई बार फैट लिवर में जमा हो जाता है, जिसे हम फैटी लिवर बोलते हैं, और फिर वो वहाँ इंसुलिन को बराबर से काम नहीं करने देता है, लिवर को काम नहीं करने देता है, जिसे हम नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज बोलते हैं। और आजकल नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज लिवर डिस्फंक्शन का सबसे नंबर 1 कारण होते जा रहा है। गॉल स्टोन का भी रिस्क बढ़ता है। हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी होते हैं, महिलाओं में पीरियड गड़बड़ होना, ज्यादा बाल आना, एक्ने होना, जिसे हम पीसीओएस का स्पेक्ट्रम बोलते हैं, वो होने का चांस ज्यादा होता है। इवन पुरुषों पे भी सेक्सुअल डिस्फंक्शन हो सकता है। इसके अलावा थोड़े मैकेनिकल प्रॉब्लम्स भी होते हैं। इतना वेट होने से आर्थराइटिस का जो इंसिडेंस है वो बढ़ जाता है। कुछ लोगों को नींद में बहुत, जिसे हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया बोलते हैं, बहुत खराटे भरना और बराबर से ऑक्सीजन नींद में नहीं मिल पाना बॉडी को, ये सारे प्रॉब्लम्स तो ओबेसिटी की वजह से होते ही है। इवन रिसर्च से ये भी पता चला है कि ओबीज लोगों में कुछ स्पेसिफिक प्रकार के कैंसर नॉन ओबीज लोगों के कंपैरिजन में ज्यादा पाए जाते हैं। ऐसा नहीं बोल पाऊंगी कि ओबेसिटी की वजह से हुए हैं, लेकिन उनमें थोड़े ज्यादा पाए जाते हैं। सो डेफिनेटली ओबेसिटी फैट की वजह से हमारे शरीर में इफेक्ट पड़ता है। ये सारे प्रॉब्लम से ओबीज लोगों का, ऊपर से डिप्रेशन, द बॉडी इमेज इश्यूज, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी लेस टॉक्ड अबाउट थिंग्स। इन सब की वजह से क्वालिटी ऑफ लाइफ डेफिनेटली कम हो जाता है। और रिसर्च से ये भी पता चलता है कि ओबीज लोगों का लाइफ स्पैन एक 3 से 10 साल, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच ओबीज दे आर, कम एज कंपेयर टू नॉन ओबीज इंडिविजुअल, उनका लाइफ स्पैन भी कम हो सकता है। So definitely obesity has ill effects, and definitely we deserve such kind of platforms, dedicated platforms to discuss obesity. थैंक यू मैम। तो जैसा कि मैम ने बताया, हम किसी भी ऑर्गन का नाम सोचें तो अपनी बॉडी में, तो वो होने का असर उसके ऊपर जरूर पड़ता है। Obesity has ill effects on almost all of the body organs. So it is very important that we, keep a watch on our body weight, not just because we want to look good, because we want to keep our organs and our body healthy. Ashish sir, I want to ask you, क्या ओबेसिटी के कोई लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं या फेटल कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो हमारी जान को खतरा पहुंचाते हैं? Yes, definitely. No, as doctors ये हमारा फर्ज है कि हम ओबेसिटी को ट्रिवियलाइज कभी ना करें। मतलब चलता है, होता है, ये अप्रोच कभी भी नहीं होनी चाहिए। बिकॉज जैसे आपने क्वेश्चन पूछा, डेफिनेटली लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, फेटल कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। अगर हम अपने कंट्री की बात करें, इफ यू गो बैक इन टाइम टू द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, हमारे एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी लेस देन 50 ईयर्स उस टाइम पे होती थी। मेडिकल केयर अच्छा नहीं था, और recently it has come up to 68 years for men and 70 years for women. That is what the life expectancy is right now. But it is thought that now, because of the obesity and diabetes pandemic, it is going to go down further. So lifespan कम होता है। There is something जो हम कहते हैं all cause mortality, cardiovascular mortality, ये obesity में बढ़ती है। जितना ज्यादा बॉडी वेट है, एक जे शेप कर्व होता है मोर्टेलिटी और बॉडी वेट के, बीएमआई के बीच में, जितना ज्यादा बीएमआई है उतना लाइफ स्पैन कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि ऑब्वियसली ओबेसिटी की वजह से लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली कार्डियोवास्कुलर रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हैं। डायबिटीज के साथ जो मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि हाइपरग्लाइसीमिया मतलब डायबिटीज, बैड कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, एचडीएल जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है उसका कम हो जाना, साथ ही हाइपरटेंशन, बीपी, ये सब जो है ये मिलके ऐसा कुछ होता है जैसे करेले पे नीम चढ़ा। सो ऑल दीज थिंग्स टुगेदर, और खास तौर पे अगर कोई स्मोक भी करता है, ये सब चीजें मिलके एक ऐसा मेटाबॉलिक वैल्यू बनाती हैं जो प्रीडिस्पोज करती हैं अर्ली एज में हार्ट डिजीज को। आजकल हम न्यूज सब देखते हैं, हर कुछ दिनों में एक सेलिब्रिटी की न्यूज आती है, क्योंकि वो नेशनल मीडिया में उछल जाती है कि शी वाज सो फिट, ही वाज सो फिट, बट उसको भी हार्ट अटैक हो गया। कोई ये नहीं बताता कि वो बंदा स्मोक भी करता था, या सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो ये चीजें, these predispose to obesity, predisposes to heart disease, obesity predisposes to stroke, जो पैरालिसिस का अटैक जिसको बोलते हैं, ये सब एक ही स्पेक्ट्रम का पार्ट है। पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज होता है। इसके अलावा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ज्यादा बीएमआई होने से और साथ में अगर कोई स्मोक भी करता है, देयर इज समथिंग कॉल्ड वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, इसका रिस्क बढ़ता है।
अगर कोई लॉन्ग एयर ट्रैवल कर रहा है या साथ में कुछ ब्लड रिलेटेड एबनॉर्मलिटीज हैं तो ये रिस्क और ज्यादा कंपाउंड हो जाता है। हमारे पैर की वेन्स में ब्लड इकट्ठा होकर वहां पे क्लॉट बनता है और उसके बाद वहां से डिसलॉज होके वो जाके हमारे लंग्स में जाके जमता है। इसको पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म बोलते हैं। ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। इसके अलावा जैसे स्वाति मैम ने अभी बताया, कुछ कैंसर्स हैं जो कि ओबेसिटी के साथ कॉजली नहीं कह सकते बट उसमें ज्यादा पाए जाते हैं। तो ओबेसिटी इनको कुछ हद तक प्रिडिस्पोज करता है, ऐसा हम कह सकते हैं। बहुत सारे कैंसर्स हैं। जीआई ट्रैक के कैंसर्स होते हैं, ईसोफेजियल हो गया, गैस्ट्रिक फंडस का हो गया, बिलियरी ट्रैक के कैंसर्स हो गए, पैनक्रियास का, कोलोरेक्टल कैंसर हो गया। महिलाओं में एंडोमेट्रियम का कैंसर होता है, ब्रेस्ट कैंसर होता है, ओवेरियन मेलिग्नेंसी है। ये सारी मेलिग्नेंसीज, इनका चांस अगर हम कंपेयर करें कोई ओबीस है और कोई ओबीस नहीं है तो ओबीस में ज्यादा पाए जाते हैं। ये सारे के सारे डेवास्टेटिंग फेटल कॉम्प्लिकेशंस हैं जो ओबेसिटी में पाए जाते हैं। और मैं एक बार फिर से बोलना चाहूंगा, ओबेसिटी के साथ साथ अगर कोई स्मोक करता है, ये सबसे बुरा काम है जो वो अपने लिए कर सकता है। स्मोकिंग इज एक्सट्रीमली बैड फॉर यू। आप ओबीस हैं या नहीं है, ओबीस हैं तो डेफिनेटली डेफिनेटली अगर आप अपना कार्डियोवैस्कुलर रिस्क कम करना चाहते हैं, सबसे ज्यादा कार्डियोवैस्कुलर रिस्क कम करने का तरीका है स्मोकिंग सेसेशन। That brings down the cardiovascular risk more than any other medicine that we can prescribe you for doing that. So I think life-threatening complications हैं. We must never trivialize obesity. It is a devastating disease complex. It shortens your lifespan. Definitely. Thank you, sir. So I just want to summarize that you should not and never ignore your weight gain, and definitely consult your physician or your endocrinologist for managing your excess body weight. So moving on, प्रसन्ना सर, हम बच्चों के बारे में बात कर रहे थे. So what are the ill effects of obesity on our children? How is it harming our children? Thank you. Actually, Dr. Swati has already told you many of them. You can classify into medical, psychological, social, academic, and emotional. All these problems occur. Even let us say academic, if you take. Those children who are obese definitely have negatively affect the school performance. One of the studies have shown overweight and obese children are 4 times likely to perform less compared to children who are normal weight because of many problems that they have. That is why even academic performance is poor. Children are obese. Coming to social, yes, actually, if a child or an adolescent is obese, he is looked down upon. They think whenever they see a obese child, the mentality is, oh, this child is eating more and not doing exercise, lazy. It may not be so. Like Ashish said, it may be some other disease, it may be genetic, it may be hereditary. But unfortunately, in the society, they are looked down upon. Look at the films also. In every film, to make fun, they have a very fat, obese child, and that child is made as stupid. So, this is how, in the society, the social, academic problems are there. That leads to emotional problem. The child becomes socially retarded. She starts socializing less with children. No, I am fat. They are not including me for sports. I am not good in athletics. I cannot play this game. So socially they get retarded. That is why very important. Children don't have obesity. They are accepted there by peers in the school, accepted as intelligent, accepted for a team to play physical activity and others. So that is why it's very important. Emotional also, because emotionally the child becomes, as I said earlier, inferiority complex. I am obese. Imagine a girl, 12, 13, 14, very fat. She will have inferiority complex. She doesn't want to go to school. I have seen many cases where the child refused to go to school. She said, they are making fun of me. I will not go to school. Let me reduce weight. They have brought many years. So these are all what we see social, emotional, and academic problems. And also you have got many of the other things like eating disorders. Many times they have very behavioral one, depression. Whether depression leads to obesity or obesity leads to depression. It is both ways. A depressed child, let us say a girl is there depressed, one of the things she gets happy is eating sweets. Lot of people who are depressed go on eating chocolates. There is a disease known as bulimia, where a fat person eats, start feeling guilty. Oh God, I have eaten so much. I am fat. I should be not eating so much. Induce vomiting. Like that, lot of psychological problems
which are be to trigger the eating habits as such. These are all problems which are there in the school, and it needs counseling. As I said, that these 30% of obese children will become adults. Dr. Swati said about polycystic ovaries. Children who are obese have irregular periods. Joint pain more common. Backache is more common. Many of these orthopedic problems, sleep apnea. Actually, if you see, Dr. Preeti was telling about lack of sleep. That is called as sleep debt. Once you have obese, the sleeping time comes down. Is it because their screen time, SMS, whatever it is, instead of minimum of 6 to 8 hours good sleep, many children may not get 4 hours. They don't sleep well at night, and in this clue, they will be dozing off, and somebody will make fun of them. This is what is known as sleep apnea syndrome. So, a lot of these problems, asthma is also more common in children. Today, we are seeing more and more diabetes in children, 5-year-old, 10-year-old, 12-year-old children. Not type 1, what we say on insulin, because of sheer obesity, children are getting diabetes. It is called type 2 diabetes in children like 40-year-old. Diabetes is becoming younger. We were seeing 60 or 70 in Europe. It has become 40, 30. I see many between 20 to 30, at least weekly one. And we will see more of 10 to 20 also, because of obesity causes insulin resistance, it causes disease. All of you have seen report says fatty liver, fatty liver. What is fatty liver? Fat person have more fat in the liver, that's why it is fatty liver. This fatty liver can lead to other diseases. Ultimately, it can cause cirrhosis also. Remember, from blood pressure, cholesterol, diabetes, blood pressure, including cancer, is more common in obese compared to non-obese. That is why childhood obesity is very important, and the best way is to prevent it. Management is very difficult. My colleagues will tell you. Prevention is much easier, better, simpler, safer, cheaper of obesity rather than treating childhood obesity. Thank you, sir. Preeti ma'am, we just want now short answers because like we are about to end this session soon. So ma'am, when should fat people go for consultation and whom should they consult? See, if they have features or symptoms of a particular disease like hypothyroidism, Cushing's, obviously they should consult an endocrinologist. Or, but the bottom line is, even if you don't have any symptoms, all fat people should go to the physician at least to screen for all these problems which are there, and get a good proper advice and counseling. And in children, if the child is fat and short, definitely the child requires evaluation, because normally the kind of obesity exogenous, those children are usually tall. So if you have a fat child who's short, he needs, and all fat people ideally should have a visit to the clinician, and then they can be directed to see और an ये पता था endocrinologist or whatever is required. थैंक यू मैम। और अगर आपको ये पता करना है कि आप फैट की कैटेगरी में आते हैं या नहीं, so you can get your BMI calculated from any of your general practitioner or physician, or even you can calculate it at your home and know whether your BMI is in the normal range or not. So moving on, Swati ma'am, our audience wants to know what about the post-pregnancy weight gain and diastasis recti. So ma'am, can you please brief us on that? So, Post-pregnancy weight gain. so post pregnancy, many women, when we counsel, when we ask, so generally women at the time of marriage are like 50 kgs, 60 kgs, not more than that. And first childbirth के बाद ही उनका marriage, उनका weight gain चालू होता है. They attributed कि हमारा तो सीजर हुआ इसलिए होता है. But that is generally not the case. पोस्ट प्रेगनेंसी डेफिनेटली लॉट ऑफ प्रेगनेंसी में जो वेट गेन होता है, दैट इज नॉट जस्ट द वेट ऑफ द बेबी एंड द प्लासेंटा. हमारे बॉडी में बहुत सारे प्रेगनेंसी के टाइम पे फ्लूइड रिटेंशन होता है और एक्चुअली फैट क्वांटिटी बढ़ता है, क्योंकि वो प्रेगनेंसी का एक तो नॉर्मल फिजियोलॉजी है थोड़ा ज्यादा फैट बनाना, और दूसरा हमारा मिसकंसेप्शन है कि हमें तो 2 लोगों का खाना है, हमारे लिए भी खाना है, बच्चे के लिए भी खाना है. दैट्स व्हाई there are social misconceptions because of which we gain excessive fat during pregnancy.
प्रेगनेंसी डिलीवरी होने के बाद थोड़े हार्मोन चेंजेस डेफिनेटली होते हैं, बट अनदर मिसकंसेप्शन इज अभी लैक्टेशन करना है, दूध पिलाना है बच्चे को तो वापस डबल खाना है, ज्यादा खाना है. सेकेंडली, आफ्टर अंडरगोइंग सम LSCS एंड ऑल, फिजिकल एक्टिविटी जो है हम बहुत लिमिट कर देते हैं. तो ये सारे चीजों की वजह से, ऑल द कल्चरल फैक्टर्स ऑल्सो एंड सम डेफिनेट मेडिकल कॉजेज ऑल्सो, वेट गेन जो है प्रेगनेंसी के बाद होता है, लेकिन इट कैन बी वेरी वेल मैनेज्ड. यानी वो हम same principles, diet restriction, exercise, say we can get back to our original self, and many celebrities have done that, and we know it for sure as a fact. Sure. Thank you, ma'am. Ashish sir, I want you to tell us what all diseases should be screened in people who are obese or fat. Are there certain disorders that fat people should screen themselves regularly, or at what intervals, and what diseases? Okay. See, I think through the course of this discussion, we have all the panelists have spoken about what are the causes of secondary obesity. So I think some of them should be screened routinely, and some when the clinical symptoms and signs dictate that. So depends on the age as well. 2 साल से कम के बच्चे में ओबेसिटी है तो वी हैव टू थिंक ऑफ सिंड्रोमिक कॉज ऑफ ओबेसिटी एज वेल. खासतौर पे अगर किसी का हाइट कम है और जैसे मैम ने बोला वजन ज्यादा है और हाइट कम है, that is when we have to think of a secondary cause. When there are certain typical facial features, आंखें ठीक से नहीं बनी हुई हैं, नाक या होठ जैसे कई बार होता है खराब है, ईयर्स का प्लेसमेंट ठीक नहीं है, एक उंगली कम है या उंगलियां ज्यादा हैं, मतलब कोई भी डिस्मॉर्फिक फीचर हो तब हमें सिंड्रोमिक कॉज के लिए देखना होता है. अपार्ट फ्रॉम दैट, सिंस द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ओबेसिटी इज एक्चुअली एक्सोजीनस ओबेसिटी, जो एसोसिएटेड चीजें हैं उनके लिए स्क्रीन तो सभी में करना बहुत जरूरी है. डायबिटीज का स्क्रीन होना बहुत जरूरी है, एंड दिस इज पर्टिकुलरली ट्रू फॉर पोस्ट प्यूबर्टल किड्स. इसके अलावा लिवर फंक्शन टेस्ट सबका होना चाहिए, जैसे हमने बात किया नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज होता है, SGOT SGPT जो लिवर एंजाइम्स है उनको देखना होता है. अपार्ट फ्रॉम दैट हमें लिपिड प्रोफाइल जिसे हम कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल कहते हैं वो देखना जरूरी है. जो अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल है HDL, जो बुरे कोलेस्ट्रॉल है ट्राइग्लिसराइड, नॉन HDL ऑल और LDL. यू हैव टू स्क्रीन फॉर ऑल ऑफ देम. जो गाइडलाइंस हैं वो ये कहती हैं अगर कोई डायबिटिक नहीं है और रिस्क फैक्टर्स हैं डायबिटीज के लिए और हमने स्क्रीन किया है, जो ADA गाइडलाइंस से कहती हैं, इफ दे आर नॉर्मल देन वी हैव टू स्क्रीन देम एटलीस्ट 3 ईयरली. बट इफ देर आर रिस्क फैक्टर्स एंड इफ क्लिनिकल सिनेरियो डिक्टेट्स तो उसको ज्यादा फ्रिक्वेंटली भी टेस्ट किया जाता है. इसके टेस्ट के लिए हम फास्टिंग PP शुगर भी चेक कर सकते हैं, और वी कैन डू अ टेस्ट विच इज कॉल्ड एन HbA1c जो कि 3 मंथ्स का एवरेज शुगर हमें बताता है. The diagnosis of diabetes, for that we need an HbA1c of 6.5 or above. So investigations 2 categories में आती हैं. पहला कि ओबेसिटी क्यों हो रही है वो देखने के लिए, और दूसरी कैटेगरी है ओबेसिटी के कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो गए हैं वो देखने के लिए. इसमें एक चीज मैंने मेंशन नहीं करी, थायराइड प्रोफाइल यूजुअली हम लोग सभी में करा लेते हैं. वी गेट दैट डन इन एवरीवन. So it's a simple test, and it's a good test so that we can screen for thyroid dysfunction in this individual. इसके beyond जो endocrine problems होती हैं वो टेस्ट हम तभी करते हैं जब हमें कोई clinical symptom या sign ऐसा दिखता है which tells us that there is a good pre-test probability of that particular endocrinopathy. Thank you so much, sir. Before we end, I would like to ask my panelists take-home message for our audience. So, Prasanna sir, what would you tell our audience before we end this session? Obesity is not a disease, but it is the mother of many non-communicable diseases. It is difficult to treat obesity, but easy to prevent obesity. Regularly check up your weight and take action so that you don't become overweight and later on obese by simple lifestyle modification. Thank you, sir. Lifestyle modification is one of the most important thing to focus on, and people need to follow it very devotionally. Preeti ma'am, a message from you. Ma'am, you're muted. Ma'am, you're muted. I think taking the cue from you, I think the parents and the elders in the family have to set an example of a good, healthy lifestyle, which would actually carry forward what Dr. Prasanna Kumar said, that it will lead to prevention, which is easier than treatment. And it would benefit in all spheres of life, not just obesity. Thank you, ma'am.
Swati ma'am. So जैसा मैंने कहा, obesity is a result of seed as well as the soil. So do need to fall into guilt trip. कि ये सब मतलब you have a predisposition to obesity which you have inherited and that's why it is. And secondly, treatment options are available. You can seek help, and nowadays good treatment options in the form of some safe medicines are available which we can try. So seek out help and don't go into a negative spiral of guilt and come out of that. Thank you, ma'am. Ashish sir, a one-line message from you. One line message, I think, from me would be less of screen time and more of playground time. अगर इतना भी हम कर सकें, और I'll give another one line message. Biscuit, namkeen, rus. These three things I tell all my patients to avoid completely. It's a misconception that these are healthy. These also belong to the junk food category. Biscuit, namkeen, rus. We keep on munching on these, and we keep saying that Right. that's all. Thank you so much, sir. So I want to tell my audience that we have forthcoming sessions in the other Saturdays of March that will focus on treatment options available for obesity, about bariatric surgery, intermittent fasting, and all other diet types of fat diets, what you should follow and what you should not follow, and what you should do to manage your weight. So I am very thankful to all our panelists for joining us today, for taking out time from their busy schedules and making our people aware about obesity, its causes, and its hazardous and non-hazardous complications. I'm thankful to Endocrine Society of India for giving me this opportunity and for conducting these sessions, which I am definitely sure are very helpful for people to be aware about endocrine and its related disorders. So thank you everyone for joining us. Keep joining us on every Saturday at 4:30 p.m. for more sessions on obesity this month and for further more enriching sessions in coming months. So with this, I would like to end this session. Thank you, Prasanna sir. Thank you, Preeti ma'am. Thank you, Swati ma'am. Thank you, Ashish sir. It was a great Thank pleasure you. interacting with you all. Thank you. Thank Bye. Take care. Thank you. Have a Thank great you. weekend. Thank you. Bye bye.